स्टार्ट करते हैं। सो हायर एजुकेशन ही कंटिन्यू करते हैं। हायर एजुकेशन में yesterday we stopped at questions related to यूनिवर्सिटी गवर्नेंस। सो चांसलर क्या होता है, वाइस चांसलर क्या होता है, इसके फंक्शंस की थोड़ी सी बातें हमने की थी कि चांसलर जो है यूजुअली प्रेसिडेंट होता है, टिटुलर हेड होता है, सेरेमोनियल हेड होता है कह सकते हैं उसकी, या फिर नॉमिनल हेड कह सकते हैं चांसलर जो यूनिवर्सिटी चांसलर्स होते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी का पूरा कार्यभार कौन करते हैं? आपके वाइस चांसलर, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं या फिर कहें एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, ठीक ना। सो थोड़ी सी बातें और करते हैं। ओके, आई थिंक चलो ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे विल टॉक मोर ऑन दिस। सो स्टेटमेंट 1 कहता है ग्रेटेस्ट चैलेंज फेसिंग हायर एजुकेशन इन इंडिया डिस्क्राइब्ड बाय FICCI 2021 are expansion, equity and excellence. Second statement say, while all three are issues indicated in the statements 1 are interlinked, equity to a large extent is dependent on expansion and access. So statement 1 की यदि बात करें, greatest challenge facing higher education in India, बताएं। Yes. चलिए आंसर देखते हैं। So yes, both the statement, when we say access, expansion, that is the access, equity and excellence। देखिए ये हमने पहले भी किया हुआ है। शिक्षा के जो कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं जिसके आधार पर हमारा पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम बेस्ड है। सबको समानता का अधिकार, इंक्लूसिव एजुकेशन की हम बात करते हैं, शिक्षा में क्वालिटी की बात करते हैं, which is monitored by UGC, we've been talking in the last class also, and expansion, जहां पर अभी तक शिक्षा पहुंची नहीं है उसको भी, वहां पर भी उसकी रीच हो, है ना। तो दोनों ही स्टेटमेंट ये सही है। चले आगे। बोथ वन स्टेटमेंट एंड ओके सॉरी, तो ये आंसर दिख गया, बट कोई बात नहीं, डिस्कस कर लेते हैं। इन इंडिया UGC has statutory responsibility for maintaining quality and coordination of institutions of higher education. Yes, बिल्कुल सही बात है। NCTE being a regulatory body for teacher education come under control of UGC. नहीं, NCTE UGC के कंट्रोल में नहीं आता। UGC के कंट्रोल में you have other bodies related to higher education. This is for related to teacher education. That is a separate body. Okay. So next question. Okay, yeah, this question we are going to discuss. So try in answering this question and then we'll have a discussion on this.
बताएं, इन यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम as prevalent now, which of the following bodies committee looks after formal curriculum and course of study? तो ये हमने पढ़ा भी है ऑलरेडी भी. यूनिवर्सिटी एजुकेशन काउंसिल, अगर यदि आप लोग आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो लेट्स जस्ट रिवाइज इट ऑल्सो. यूनिवर्सिटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के क्या काम है, एकेडमिक काउंसिल क्या करता है, यूनिवर्सिटी कोर्ट क्या करता है, बोर्ड ऑफ स्टडीज क्या करते हैं, है ना. सो चलिए देखते हैं इनके फंक्शनैलिटीज एक बार वापस से. यूनिवर्सिटी कोर्ट जो है कहता है यूनिवर्सिटी कोर्ट इज द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी. याद रखिएगा, इसके अंदर ही ये कंट्रोल करता है यूनिवर्सिटी कोर्ट, एकेडमिक काउंसिल को भी, फाइनेंशियल कमेटी को भी, बोर्ड को भी, है ना. सो यूनिवर्सिटी कोर्ट इज द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी and has power to review the acts of executive council as well as the academic council. Chancellor is the chairperson of university court. Important point, यहाँ से भी आपको next time questions देखने को मिल सकता है. Okay, Shruti, are you with me? Next question is about. Yes, ma'am. Okay. Executive council. Ma'am, why is nobody joining the class? No idea. Ma'am. So executive Okay, council क्या कहता है? It is also known as syndicate or board of management. The syndicate executive council is principal organ of management in the university. The syndicate would present in different segments of the universities, such as various facilities, colleges, teachers, etc. So syndicate, दोनों नाम याद रखिए. एग्जीक्यूटिव काउंसिल एग्जाम में दिया हो, सिंडिकेट दिया हो, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट दिया हो, ये प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ मैनेजमेंट है यूनिवर्सिटी के अंदर. तो यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी एग्जीक्यूटिव काम होते हैं, ये बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट कहें या सिंडिकेट करे, यही कहता है. ओके. Okay, ma'am. So नेक्स्ट इज एकेडमिक काउंसिल. एकेडमिक काउंसिल से एक क्वेश्चन बना था. हाईएस्ट एकेडमिक बॉडी ऑफ द यूनिवर्सिटी है. फंक्शंस इंक्लूड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स, इंस्ट्रक्शन, कोर्स डेवलपमेंट, एग्जामिनेशन. यही तो क्वेश्चन आया था, है ना. राइट टू एडवाइस एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑन ऑल एकेडमिक मैटर्स. तो एकेडमिक काउंसिल आपका करिकुलम, स्टैंडर्ड्स, इंस्ट्रक्शन, कोर्स डेवलपमेंट, एग्जामिनेशन, इन सारी चीजों को देखता है. फिर फाइनेंस कमेटी, जाहिर सी बात है, गोज विदाउट सेइंग, यूनिवर्सिटी में एक भी रुपए का लेन देन होता है तो ये फाइनेंस कमेटी उसको अप्रूव करती है, और इसके मेंबर्स की संख्या जो है 7 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. यूनिवर्सिटी के लिए फंडिंग कैसे रेज किया जाए जब भी जरूरत हो, ये सब चीजें करना फाइनेंस कमेटी का काम है. So hope this is clear to be you. Now coming to question, the question talks about in university education system, as prevalent now, which of the following bodies, committees looks after formal approval of curriculum and course of study? So hope now you all are able to understand the question. देखो ये क्वेश्चन 2018 में भी आया हुआ है, 17 में भी आया हुआ है. I think not before that, but yes, these governance वाले क्वेश्चन 17-18 से आने शुरू हो गए हैं और हर साल आते हैं. So hope you are able to remember it. बताएं अभी आंसर. Ma'am, academic council. Yes, academic council. So you know, practicing from app, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर सकते हो. नहीं तो अगर आपके पास कोई बुक है, अगर आप पेपर बैक प्रेफर करते हो तो यू हैव सम बुक, सो यू कैन डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. इंपॉर्टेंट इज एनालिसिस. क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते नेट में. अगेन आई एम टेलिंग यू, नॉट मेनी क्वेश्चंस आर रिपीटेड डायरेक्टली, बट इफ यू डू एनालिसिस, पेपर्स लाइक आई टेल यू, स्टैट्स के क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं.
और इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। जैसे आपका टीचिंग के कॉन्सेप्ट, रिसर्च के कॉन्सेप्ट, पेपर 1 की यदि बात करूँ तो ये सब कॉन्सेप्चुअली सेम ही होते हैं। जब जब हम कह रहे हैं जैसे कि ये यूनिवर्सिटी कोड, एकेडमिक काउंसिल, हर साल क्वेश्चंस बने हैं यहाँ से, तो दैट मच वी कैन प्रिपेयर। अब इफ आई आस्क यू फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया, और या फिर कुछ बॉडीज से क्वेश्चन आ गए, कुछ नए सारे, इसने क्या कहा था कोई पर्टिकुलर बॉडी का, तो ये सारे हमारे बस में नहीं है। तो कहने का मतलब जो हमने किया हुआ है ऑलरेडी, उसको आप बिल्कुल अच्छे तरीके से कर लीजिए, जिससे पिछले ईयर्स में क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। सो मैम फर्स्ट पेपर टू पेपर, में स्टैट्स बिल्कुल नहीं हो पा रहा है स्टैट्स। देखिए स्टैट्स इज रिलेटिवली अ टफ यूनिट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत सारे बच्चों को स्टैट्स में दिक्कत आती है, क्योंकि स्टैट्स हमारे को बिल्कुल मैम अच्छे लेवल की या कैन आई लीव स्टैट्स? प्रोवाइडेड यू डू अदर यूनिट्स वेरी वेल। और स्टैट्स में देखो कोई भी पूरा यूनिट लीव नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू नो सैम्पलिंग, स्टैट्स का एक हिस्सा है सैम्पलिंग, विच इज अ रिलेटिवली इजी टू क्रैक। तो सैम्पलिंग कर लो अच्छे से, हाइपोथेसिस कर लो अच्छे से, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, और आप लोगों को बहुत सारे टेस्ट है, बट एटलीस्ट टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, इतने तो क्लैरिटी आपको होनी चाहिए ना। And once you do it, see, leaving is not a good idea because we have time. Okay. मैम मैंने किया है अलीशा मैम की क्लासेस से, पर स्टैट्स मैम बहुत कंफ्यूजन हो जाते, समझ में ही नहीं आता बिल्कुल। Okay, Shushti, आई ट्राई वंस I will अगेन। talk to you separately in the session we have. Okay, let's continue with the questions. चलो ये क्वेश्चन का बताएं। ओके मैम। डे टू डे ओके मैम। एडमिनिस्ट्रेशन, I just revised. Okay, so yes, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखता है, सिंडिकेट या एग्जीक्यूटिव काउंसिल? रूबी आपको रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा इसका, स्टार्टिंग में आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस। ओके, सो स्टार्टिंग के कुछ मिनट देख लीजिएगा। देखो 17 में भी ऐसे क्वेश्चंस आए हैं रिलेटेड टू, ओके, डीम्ड यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है ये। द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज द चांसलर ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी। कल भी हमने डीम्ड यूनिवर्सिटी पे क्वेश्चन देखे थे। क्या गवर्नर चांसलर होता है डीम्ड यूनिवर्सिटी? डीम्ड यूनिवर्सिटी कैन डिजाइन देयर ओन सिलेबस, कोर्स वर्क, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। दे कैन फ्रेम देयर ओन गाइडलाइंस रिगार्डिंग एडमिशन एंड फीस, क्या वो अपना फीस डिसाइड कर सकते हैं। दे कैन ग्रांट डिग्रीज, क्या डीम्ड यूनिवर्सिटी डिग्रीज ग्रांट कर सकती है? देखो डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में, गवर्नर ऑफ द स्टेट चांसलर नहीं होता है डीम्ड यूनिवर्सिटी का यूजुअली। बाकी जो स्टेटमेंट है आपके, they can design their own syllabus, they can frame their own guidelines, they can grant their degrees, all are true. Let's talk more about deemed university because deemed university पे काफी सारे questions आए हुए हैं। चलिए देखते हैं। Okay, let's do few questions। यहाँ पर आगे deemed university पे detail discussion करेंगे। Again, see, I don't expect you to do these questions, just listen to me। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस पूछा है एजुकेशनल कम्युनिकेशन का। नाउ दिस इज रीसेंट ट्रेंड, इससे पहले की बात करोगे तो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस एट मैक्स पूछा जाता था। सीईसी का फुल फॉर्म क्या है, एआईआर का फुल फॉर्म क्या है ना। या फिर कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है, यूजीसी कंट्री वाइज क्लासरूम का कॉन्सेप्ट होता क्या है, ज्ञानवाणी जो है किसका, किससे एसोसिएटेड है, इसके ओनर कौन है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। बट now it is more, all the more difficult because this is not one, this is many. So let's just talk about it कि next time अगर इनमें से कोई एक आपको options में दिखे तो you should be able to answer it. So starting with All India Radio. All India Radio जो है एक गवर्नमेंट FM रेडियो है।
मोटो है इसका बहुजन सुताय, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, ओनरशिप प्रसार भारती, और लॉन्च डेट, नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट, याद रखिए काफी पुराना है बहुजन यहाँ पर भी देख सकते हैं इसका ये लोगो है AIR, आकाशवाणी कहते हैं, है ना। तो 1927 से ये चला आ रहा है, तो दिस डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कीप इन योर माइंड। 1927 इज द FM ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी, आकाशवाणी का साल है। तो आप बचपन से देखते आओ, मतलब जनरेशन से इसको सुनते आ रहे हो, है ना। फिर एक था CEC, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, ये कब आया था? CEC सेटअप ईयर आपको याद रखना है 1993। CEC क्या करता है? CEC इज अ नोडल एजेंसी टू कोऑर्डिनेट, गाइड, फैसिलिटेट एजुकेशनल प्रोग्राम थ्रू इट्स मीडिया सेंटर्स, ठीक। और एक और पूछा गया था आपसे, so CEC has been established with the goal of addressing the needs of higher education through television and other ICT means. And then there was a concept asked to you was regarding UGC country-wise classroom. What is this? Realizing the potential of and power of television to act as a means of educational knowledge dissemination, UGC ने start किया country-wide classroom programs. Which year? 1984, for the production of educational programs. Initially, the media centers were set up in 6 universities. So you have to remember UGC countrywide classroom program started in 1984. 1993 CEC was set up, the oldest being what do you say, AIR, है ना. So coming back to the question, see, so AIR is the oldest, this we all agree. दो ऑप्शन यहाँ से आपके एलिमिनेट हो जाते हैं, है ना. अब आ जाता है आपका ज्ञानवाणी. ओके, ज्ञानवाणी के ऊपर बातें नहीं की थी. देखो ज्ञानवाणी जो है, ओके, ज्ञानवाणी इज अ इग्नू का चैनल, ठीक है, रेडियो चैनल ऑफ इग्नू ज्ञानवाणी. ज्ञानवाणी भी कई बार क्वेश्चंस में आया हुआ है, तो राइट सीक्वेंसेस, पहले ऑल इंडिया रेडियो A, देन B, 1984 CEC आया. UGC कंट्री वाइड क्लासरूम कब आया? 1984 में. CEC 1993 में आया था. एंड द लास्ट वन ज्ञानवाणी कब आया है आपका? 2000 में. तो ज्ञानवाणी सबसे लेटेस्ट है, ठीक ना. सो होप सम ऑफ यू विल बी एबल टू रिटेन दिस. ओके, now this value education, one short question from value education. I'll be giving you a video on value education. It's very important, and value education के questions tough आते हैं. Still take some time you all and try and answer this question. So कहता है योग is the union of body and mind with the soul. देखो इन वेस्टर्न वर्ल्ड, ये कुछ ज्ञान की बातें हैं, लाइक वेस्टर्न वर्ल्ड इट इज कॉल्ड एज योगा, ठीक है. लेकिन अगर आप इसको हिंदी में या इंडियन पर्सपेक्टिव से देखेंगे, सो इट इज योग एंड यूनियन ऑफ बॉडी एंड माइंड विद द सोल. देखो योग एक्चुअली में वियोग होता है, बट दिस इज लाइक हायर लेवल ज्ञान विच इज नॉट आस्क इन एग्जाम. एक होता है एग्जाम का आंसर, तो एग्जाम के आंसर से ये स्टेटमेंट सही है, बट अंडरस्टैंड दैट यू शुड नो द रियल मीनिंग ऑफ योग. पहली बात तो इसको हिंदी में योगा नहीं कहते, हिंदी में इसको कहते हैं योग, एंड योग इज एक्चुअली वियोग. what is the meaning of viyog? Viyog stands for
सेपरेशन कहें अगर इंग्लिश में, सेपरेशन ऑफ व्हाट, योर jiva with your physical body. So when once your physical body and your soul separates, it's not like death, understand this, it's like you are in existence and still you are not in existence. So you realize by your cautious mind that this physical body is also not yours. That is the real meaning of yoga. But union of body with mind and mind with soul is what yoga is. So this is a crude definition of yoga, but yes, correct hai. Both value education and environmental education can be integral to yoga programs being conducted at school college levels. So yeah, in environment, like if you know, some of you might be doing yoga. So देखो, जैसे बहुत सारे postures की बात करूँ, एक example से समझाती हूँ. योग में कैसा होता है कि if you have to breathe from mouth, so you are prohibited. For example, you are prohibited कि अगर आप polluted air में है, open air में है, तो वैसे exercises आप नहीं करो जहाँ पे mouth की breathing की जरूरत हो, because the pollution directly goes inside your body. So yes, these both can be integrated. So both the statements here are true. Hope you are getting it. So NEET, again the schemes are very very important. Any scheme can be asked. Basic question ये भी पूछा गया है, NEET का full form क्या होता है? So NEET and MHRD schemes क्या करता है ये? NEET के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं. देखो, Ministry of Human Resource Development, now it is what? MOE. Earlier it was Ministry of Human Resource Development, now it is Ministry of Education. So they have announced this program, NEET, National Education Alliance for Technology. So इस स्कीम का मोटा मोटा काम क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करना, लर्निंग को और भी ज़्यादा पर्सनलाइज करना, टेक्नोलॉजी का यूज करना, इस तरीके से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल बनाना, एडुटेक कंपनीज को बढ़ावा देना. MHRD या फिर कहें MOE will be facilitator and ensuring also that these technology is available to weaker sections of society. Under this scheme, national NEET platform will be provided to create one-stop access. मतलब ऐसा access should not be a barrier also. So edutech companies would be responsible for developing solutions and manage the registration of learners through the NEET program. NEET also aims at MOOC, concept of MOOC, so that everyone can be accessible. Technology should be accessible to all the masses. और NEET किसके अंदर में आता है? Since we are talking about National Education Alliance for Technology, टेक्नोलॉजी का एपेक्स बॉडी क्या है? AICTE, All India Council for Technical Education, would be implementing agency for NEET program. So hope this gives you a kind of idea what is NEET like. Okay, so एक बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं. The full form of NEET is so yeah, National Education Alliance for Technology. Okay, next question. Which of the following committees, commissions in their report recommended that science, education and research should receive high priority to accelerate national economy? रिसर्च, शोध को बढ़ावा देने की बात सबसे पहली बार किस में की गई थी? आचार्य नरेंद्र देव कमिटी. टास्क फॉर यू टू फाइंड आउट. Let's talk about the other committees which are asked multiple times. चाहे आपको ऑप्शन में दिखेंगे, चाहे क्वेश्चन में दिखेंगे. ओके, सो एक बार इन सबको रिवाइज कर लेते हैं.
Answer here is Kothari Commission. Starting with some of the major committees, तीनों ही रिवाइज कर लेते हैं. राधा कृष्णन कमीशन 1948-49. क्या क्या रिकमेंडेशन थे इसके? 18 वीक्स पीरियड इन अ वीक, लेकिन रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए 15 वीक 12 to 15 वीक का पीरियड होना चाहिए. एजुकेशन के लिए रिलेटेड 3 फेजेस की बात करता है. जनरल एजुकेशन, लिबरल एजुकेशन, ऑक्यूपेशनल एजुकेशन. देखो ये पहला रिपोर्ट था आज़ादी के बाद, राधा कृष्णन कमीशन. देखो 1948-49 जब लिखा रहता है तो मतलब एक साल में ये स्टार्ट हुआ और इसकी कमेटी बनाई गई और दूसरे साल में इसने इसके अपने रिपोर्ट सबमिट की. PhD should be 2 years and student examination include thesis, viva voces. So higher education से related ज़्यादा जो है इन्होंने recommendation दी थी. और भी कहते हैं passing marks. Student should get 70% or more to get first class, 55 to 69 for second class and at least 40% for third class. तो इसको अभी देखेंगे आजकल के एजुकेशन सिस्टम में रिड्यूस कर दिया गया है. नो सिस्टम ऑफ अवॉर्डिंग ग्रेस मार्क. तो ये मोटे मोटे पॉइंट्स थे आपके राधा कृष्णन कमीशन के, ठीक ना. फिर आता है आपका मुदालियर कमीशन 1952-1953. इसको स्कूल एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जानते हैं. इट इज पॉपुलरली नोन एज सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड थे. सो इट रिकमेंडेड इंट्रोड्यूसिंग अ 3-year secondary, 4-year higher secondary education system. It also advocated setting up of multi-purpose schools, vocational training institutions, and pupil teachers should be trained in 1 or 2 extra curriculum activities also. शिक्षकों को भी, टीचर्स को भी कहते हैं उनको 1 या 2 एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में भी ट्रेन होनी चाहिए. और इनफैक्ट आज भी अगर आप नैक को फॉलो करते हैं, नैक का वन ऑफ द क्राइटेरिया है those who are institution with affiliated institutions, और फ्यूचर में यदि आप एसोसिएट करोगे, one of the criteria is for NAC is you as a teacher have to constantly upgrade yourself. You have to do things like if you're doing something out of your comfort zone. So for example, management is my specialization, and if I teach something like a IT subject, so this is not my forte, still if I'm doing it, then it will give me extra points. As a teacher, I will get some extra points because I'm doing things which are out of my comfort zone. So teachers should also टीचर. तो ये जो मुदालियर कमीशन है ये 2 चीज के लिए फेमस है. एग्जाम पर्सपेक्टिव से ध्यान में रखिए. एक तो बात करता है ये सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड रिफॉर्म्स की, और दूसरा टीचर एजुकेशन से रिलेटेड भी इसमें बातें की गई है कि टीचर एजुकेशन जो है वो भी कैसे बेहतर किया जाए, ठीक ना. अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट, जिसमें का एक वर्ड इम्पोर्टेंट है. कोठारी कमीशन के एक वर्ड से क्वेश्चन आए हुए हैं स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा. सो पहली बात तो देखिए, ये आजादी के बाद एक पहला व्यापक रिपोर्ट था जिसमें काफी जो है हर एक एरिया के बारे में बात की गई. जैसे अगर मुदालियर की बात करें तो इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू, अभी हमने मुदालियर कमीशन की बात की तो इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू स्कूल एजुकेशन, ऑल्सो इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू टीचर एजुकेशन. इससे पहले हमने बात करी आपका राधा कृष्णन कमीशन. सो राधा कृष्णन कमीशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू हायर एजुकेशन स्पेसिफिकली. इसमें जूनियर लेवल एजुकेशन की इतनी बात नहीं की गई, ठीक है. लेकिन कोठारी कमीशन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कोठारी कमीशन पे पहली बार हर एक स्टेज के लिए बातें की गई थी. ईयर इम्पोर्टेंट है 1964 में डीएस कोठारी की चेयरमैनशिप में ये कमेटी का गठन हुआ, और 1966 में इन्होंने रिपोर्ट अपनी सौंपी. देखिए इसका जो नाम है एक्चुअली में क्या है, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट. सो यू कैन बी आस्क्ड द रियल नेम आल्सो, दैट एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन सी है, ठीक है. मेन रिकमेंडेशन एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. 10+2+3 पैटर्न अक्रॉस द कंट्री लाने की बात की गई. जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है कब तक चलाइए, अपनी नई एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 से आने से पहले तक के यही चलता आ रहा है हमारे कंट्री में. 10 years of schooling plus 2 years of intermediate and 3 years of degree college for non-technical, 4 year for technical maybe.
सो सेम पैटर्न, ये रिकमेंडेशंस कहाँ से ली गई? अच्छा, एक और बात कि हमारी जो पहली एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो कब आई थी, किस साल में आई थी? 1968। दूसरी एनईपी कब आई थी हमारी? दूसरी एनईपी आई थी, बताएं, एनईपी 2 व्हेन इट वाज लॉन्च? नो वन? ये रिवीजन चल रहा है आप लोगों के लिए, मोस्ट ऑफ यू के लिए। बढ़िया है, याद करने का बहुत आसान तरीका है। देखिए, सिर्फ इसको उलट दीजिए। 1986। okay, so we were discussing why Kothari Commission is so important also, because based on the recommendation of Kothari Commission, our first education policy, national education policy, was formed. Okay, so we were talking about this pattern, 10 plus 2 plus 3 pattern. इन्होंने बात की थी प्री प्राइमरी एजुकेशन के जो अलग अलग नाम है, किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, प्री बेसिक, इसको हम एक साथ प्री प्राइमरी, प्राइमरी एजुकेशन बुलाएं, और प्राइमरी एजुकेशन शुड बी लोअर प्राइमरी अप टू 4th स्टैंडर्ड. Further classified schooling as upper primary and higher primary. High school is up to 10th standard. This is what the structure we have been following so far. Undergraduate education was classified as 11th and 12th standard under the name of higher secondary or pre-university. So अभी भी यही structure follow करते थे हम. Graduate studies were recommended to be standardized 3-year course and 4-year for honors. Also, very important recommendation is, it recommended that 6% of the national education, just give me a minute students. Okay, so it recommended 6% of the national income should be spent on education. Unfortunately, see, these recommendations came when? Way back in 1966. और हम आज तक बताएंगे, आज तक हम कितने % एजुकेशन पे खर्चा कर पाते हैं? नेशनल इनकम का कितना % हम एजुकेशन पे खर्चा कर पाते हैं? नॉट मोर देन 4%. So it's a very sad part for India that education is never in the list of priority for the politician. किसी भी की सरकार रही है ideology की, it has been the same. So a question, India's first national policy on education was a sequel to the recommendations of which of the following commission? So now we are through. It is, are you all with me? Okay, so yes, hope the answers are for this question. Okay, so yes, it is Kothari Commission.
कोठारी कमीशन की देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, वी हैव बीन डिस्कसिंग इट, मतलब हर बार क्वेश्चन आता है ये दीज आर लाइक फ्री के मार्क्स फॉर यू ऑल। तो एग्जाम में कोठारी से आंसर्स क्वेश्चंस आए तो उसको मिस नहीं करना है। व्हाट परसेंटेज ऑफ नेशनल इनकम शुड बी इन्वेस्टेड इन एजुकेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। According to National Skill Qualification Framework (NSQF), Level 8 competency. So this is unique. स्किल्स क्वालिफिकेशन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। एक क्वेश्चन आपको स्किल डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोग्राम से देखने को मिलता ही है। सो इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। So let's quickly revise. The answer here is level 8 competencies is for postgraduate degree, but let's revise others. So NSQF level 4 is सर्टिफिकेट। याद रखिएगा, सर्टिफिकेट के लिए 6 महीने की सर्टिफिकेशन हो सकती है, अप टू 6 months। एंड अगर आपने सर्टिफिकेशन कोर्स की है आफ्टर 10 और 12, 30 क्रेडिट्स आपको मिलेंगे। देखिए मोस्टली अब्रॉड में ये क्रेडिट का सिस्टम चलता है। सो इंडिया डज हैव एन ऑप्शन ऑफ कन्वर्टिंग परसेंटेज इनटू क्रेडिट्स, और क्रेडिट्स भी यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं नेक्स्ट टाइम। डिप्लोमा 1 साल के लिए 60 क्यूमुलेटिव क्रेडिट्स, अगर 10+2 के बाद आप करते हैं तो 60 क्यूमुलेटिव क्रेडिट्स आपको मिलेंगे। NSQF level 5 is diploma, level 4 is certificate, level 5 is diploma, level 6 is advanced diploma। so 2 साल के लिए जैसे PGDM वगैरह होते हैं उसके लिए 120 क्रेडिट्स मिलते हैं। फिर लेवल 7 इज वोकेशनल डिग्री, 3 साल तक के लिए वोकेशनल डिग्री आप कर सकते हैं आफ्टर 10+12, 180 क्यूमुलेटिव क्रेडिट्स मिलते हैं। एंड क्वेश्चन आपका था पीजी डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। सो डिफरेंस समझिए, एडवांस डिप्लोमा, डिप्लोमा, एंड दिस इज अबाउट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, मतलब ग्रेजुएशन के बाद किया जाने वाला डिप्लोमा। NSQ लेवल 8 है, ठीक ना। यही से क्वेश्चन बना था। सो 1 year and 60 credit after BVOC. Level 9 is master's vocational degree, so 2 years, and bachelor's अगर आपके vocational में हो उसके बाद आप master's vocational कर रहे हो तो 120 credits इसके लिए मिलते हैं। Research level is NSQF level 10। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, so do revise this chart well before your exam. Okay, so this will be our last topic for discussion. I wanted to discuss deemed university with you all. So yeah, an institution in the field of higher education seeking deemed to be university status must have been in existence for at least 10 years. A deemed to be university must have at least 5 postgraduate departments. So if anyone know the answer, want to attempt, can attempt. So we'll discuss deemed universities. Okay, let's discuss deemed university. Right answer is 1 is incorrect, but 2 statement is correct. कहता है a deemed university, deemed to be university must have at least 5 postgraduate departments, 5 postgraduate departments। इसका क्या मतलब होता है? postgraduate departments क्या होते हैं? Oh, this is clear. Like management can be one department, humanities can be another department, IT can be one department, IT related courses you can do. So this is the departmental structure. कम से कम 5 PG programs होने चाहिए। Commerce can be one department, likewise. पहला स्टेटमेंट गलत क्यों है इसको आगे समझ लेते हैं। सो कहता है डीम्ड यूनिवर्सिटी होने के लिए कुछ क्राइटेरियाज होने चाहिए। बीइंग अ डीम्ड यूनिवर्सिटीज allows them to decide on their fee structure, this we have already seen, and admission procedure। एक यूनिवर्सिटी यदि डीम्ड यूनिवर्सिटी है तो वो अपना फी स्ट्रक्चर खुद डिसाइड कर सकती है, अपना एडमिशन प्रोसीजर खुद डिसाइड कर सकती है, एंड after declaration of the new prescribed guidelines, the university will also gain status if they mention below pointers. So let's have a look at the pointers. पहला कहता है
इट इज इम्पोर्टेंट, ये 2019 से ही एप्लीकेबल है ये पॉइंटर्स जो आए हैं. So it is important to for applying institutions to be in operational condition for at least 20 years or more. So the question was related to this only. Question में क्या बोला था? An institution in the field of higher education seeking to be deemed university status must have been in the existence for at least 10 years. लिखा था इसलिए गलत हो गया था. कम से कम 20 साल ऑपरेशन में होना चाहिए. नंबर 1. At least 2000 students and 100 professors or teachers per academic year is also a must for deemed status. तो याद रखिएगा क्राइटेरिया डीम्ड यूनिवर्सिटी से भी लगभग हर एक दो एग्जाम को छोड़ के क्वेश्चंस आए ही हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी के क्राइटेरियाज को लेकर के, है ना. पहले भी हमने कल की क्लास में भी देखे, आज भी हम देख रहे हैं. So next is a minimum of 1:20 teacher-student ratio must for autonomy. याद रखिएगा. फिर 1/3 of the total students in the institution must pursue postgraduate or research courses and 30 square meter for each student. So infrastructure में this is important. The institution has to prepare affidavit of the approved confirmed seat for each of four offered courses, total number of students taken. So these are the procedures that they have to follow. But criteria के हिसाब से ये important चीजें जो आपको याद रखनी है, बहुत ही important है ये points. Okay. So एक और question quickly देखते हैं. ये आप बताएं अब. Deemed university is a non-affiliating university and teacher-student ratio must not be less than 1:30. बताएं quickly. Okay. C. Statement 1 is correct and statement 2 is false. Yes, deemed university is a non-affiliating university and teacher-student ratio in a deemed university must not be less than 1:10. What should be the right answer? It should be 1:20. Okay. So ये स्कूल लेवल पर भी क्वेश्चन आता है बीएड वालों को, हमें कॉलेज लेवल पे पूछा जाता है डीम्ड यूनिवर्सिटी के ऊपर. ओके. सो एक बेसिक सा क्वेश्चन आया था. आर्या का फुल फॉर्म पूछा है. एमएचआरडी या फिर एमओई अभी कहें. एमओई स्कीम में आर्या का फुल फॉर्म क्या होता है बताएं. मैनेजमेंट वालों के लिए ये पेपर 2 के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है. पेपर 2 में भी इससे क्वेश्चंस बने हैं. आपका यूनिट एंटरप्रेन्योरशिप का जो है यूनिट 10. One, two, three, four. Let me ease it out.
Okay, so this scheme is Atal ranking of institutions on CA. Okay, Atal ranking of institutions on innovation achievement. ठीक ना? So I've added some points on this. This promotes innovation and entrepreneurship development, a very important scheme. पेपर 2 में भी ऑलरेडी इसके क्वेश्चंस आए हुए हैं. इनोवेशन अचीवमेंट की बात करता है अटल रैंकिंग, और ये हमारे इंडिजिनस रैंकिंग है, मतलब हमारे कंट्री के रैंकिंग है. ये इसके अलग अलग पैरामीटर्स है. यहाँ पर आप देख सकते हैं बजट, फंडिंग, फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज कैसे है, अवेयरनेस ऑफ आइडिया जनरेशन, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, गवर्नेंस, कमर्शलाइजेशन, लर्निंग मेथड्स. सो इस पैरामीटर्स के बेसिस पे आर्या रैंकिंग जो है दी जाती है. सो यस,